Hello, welcome back to another video, and today's video is a very interesting one because we are going to talk about 10 trending fragrances of 2025. So these are fragrances that have arrived in India in 2025. Some are very nice ones, some are okay, but I think you should definitely try any of these or all of these and figure out which one are you missing in your collection and which one is something that you should definitely add to your collection as a fantastic fragrance, right? So अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अगर इस वीडियो का आपको एक समरी चाहिए तो अंत तक बने रहिए, जहां पर मैं एक हिंदी समरी दूंगा आपको इस पूरे फ्रेग्रेंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 10 फ्रेग्रेंसेस जो नए हैं, जो ट्रेंडिंग है, जो जरूर आपको ट्राई करने चाहिए। काफी अच्छे हैं, थोड़े हिट मिस भी हो सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट गोइंग राइट आफ्टर दिस इंट्रो। यू वाचिंग द परफ्यूम एक्सपीरियंस, माय नेम इज रॉडनी। लेट्स गेट गोइंग राइट आफ्टर दिस। All right, welcome back. At number one, or rather, my first fragrance in this particular list has to be one of the newest Latafa flankers to come out, and this is a beauty. Now, this is called the His Confession, and this is a killer fragrance for you to try because it won absolutely. Just look at the bottle. It's so pretty. It looks like something out of a Greek artwork that's been done. Now, this fragrance actually smells a lot like a blend of a lot of the iris fragrances together. Think about Dior Intense, think about Gentleman Givenchy Reserve Privé or Umo Intense. All of them have been blended together to give you a very powdery, ambery, iris-based, beautiful lipsticky kind of a fragrance which works absolutely phenomenal. The scent quality of this one is top-notch. The scent trail as such is very beautiful. This is a little softer on projection, does only about 1.5 feet or so, I would say, and performance is about 4 to 5 hours time, but during that point of time it actually works fantastically well. It really is very beautiful, subtle, and something that leaves a beautiful trail along. If you're looking for a very nice date night scent, and especially if you cannot afford a Dior Intense, or if you cannot afford, let's say for example, Givenchy Gentleman Reserve Privé, then you can definitely go in for this, minus the boozy element. And if you're a fan of iris fragrance as such, then this is a killer fragrance for you to try. The number 2 fragrance is again for me from the house of Latafa, and I think I'm so very happy when I talk about this. This is the Teriyaki Intense. Now, the Teriyaki Intense, I actually forgot to carry the bottle from the store. That's why I don't have it right now here. The Teriyaki Intense is absolutely a gorgeous ambery, plum, liquor-based kind of a fragrance, which is very dense, strong. It's got a very beautiful scent profile to it, which is ambery. It's got a little bit of a powdery element. In the dry down, it might also remind you a little bit of Perfumes de Marly's Alter as well, a little bit of that gourmand vibe as well. Overall, one of the best fragrances, or probably the best fragrance that Latafa has ever done, and absolutely a stunner fragrance. Does 2 to 2.5 feet of projection, lasts 6-7 hours long. One fragrance that you can wear for celebrations, weddings, any occasion, and you will definitely garner a lot of compliments from it. Fantastic fragrance, and we've sold quite a few of them, but unfortunately now it is out of stock. But definitely when it comes back in stock, I'll definitely let you guys know. Fantastic fragrance. It's a must have in your collection if you like a nice dark ambery boozy kind of a fragrance that works for a lot of occasions. Okay, so, and if you want to look at buying any of these, you can definitely visit our website ThePerfumeExperience.in and get all of them, including some decants and all of these fragrances as well. How's the summer treating you? It's killing me here in Bangalore. It's very hot and it gets very humid, and especially if you're on the top floor and you're recording just below that, it's crazy. Right, the next fragrance is this beautiful fragrance from Afnan, which came out this year. This is the Afnan 9 PM Rebel, and this is a fantastic fragrance in my opinion. This is something that if you haven't tried, you should definitely try it, because this is pineapple, oak moss, a lot of beautiful pineapple sweet nuances. There's a lot of saffron type of a vibe as well. There's a little bit of that Baccarat Rouge type of a vibe that comes into an Aventus mode kind of thing. Very beautiful. The best part about this beauty is that the performance is killer. It actually does 5-6 hours easy. It projects well. Overall, it's got a very mass-pleasing DNA, especially if you like an Aventus vibe or a Baccarat Rouge type of a vibe, which is a sweet cotton candy pineapple type of a fragrance. Then you will absolutely love this. This is killer. The price point at this is fantastic, and for that you get a gorgeous scent that you can totally enjoy. Definitely don't miss out on the Afnan 9 PM Rebel.
Talking about another Afna now, this is the kid which doesn't, which has got a little bit like you can say a mixed review, and I'm talking about the collector's edition, the Supremacy Not Only Intense Collector's Edition 100 ml. Now this is supposed to be a take on the Aventus Absolute, but I don't think about it that way. For me, this is a more spicier, green, aromatic type of a fragrance. But the part which goes wrong for me in this is the kind of performance. It's a very soft kind of a projection. Fragrance does about maybe 1 to 1.5 feet of projection, but surprisingly it does go perform well on skin. It does about 5-6 hours easy, but this overall scent profile is a little bit of a hit or a miss kind of thing. In the same DNA, if you think about the Theorem Matrix, I feel the Theorem Matrix is a lot more better because the dry down of that is a lot nicer, lot more vanilla kind of a thing. This has got that spicier, has got a very ambery, spicy, green aromatic type of a vibe as well, but has something that's lacking on it. It misses the punch of the Aventus Absolute. Al-Maham has got a very nice Aventus Absolute that you should definitely try if you like a very nice version of the Creed Pineapple versus along with that a little bit of that aromatic lavender type of a vibe coming from Dear Swatch kind of a DNA. It is pretty good, but nonetheless this is a DNA that you can definitely try. You never know because fragrances are very subjective, so somebody might actually like it a lot, somebody might not like it as well. There's a huge possibility of that. I think there are a couple of decants left with us. You can definitely try it and see if this is one for you. The next one is from the house of Ahmed Fragrances, Ahmed Al Maghrabi, and there are two fantastic fragrances. I think both of them I have reviewed and I kind of absolutely love it. One is the Tiff Tiff. Now this is the O'Clock, sorry. So this is basically the dupe of Jean Paul Gaultier's Ultra Male, and this is a very nice fragrance like that. The only thing is this is a lot more sweeter and the bubblegummy effect is a little nicer. But if you look at performance, I would say 9 PM is still rock solid and does a lot better overall. But if you haven't tried Jean Paul Gaultier's Ultra Male fragrance and you want to try something from Ahmed because you know they have long lasting high concentration fragrances, then you can definitely try this. Definitely a very good one to consider. But if the question is between this and between 9 PM, I'd still go with 9 PM. All right. So O'Clock is one definitely to try. We are going to add this in decant, so you can definitely try that as well. The other fragrance, which is the next one, is the Tiff Tiff, and that is something that I absolutely enjoy, which is already gone for decanting. So will be added to decant maybe in about 2 weeks time from now. So Tiff Tiff is basically a summer fruity, a little bit bubbly, spritty kind of a fragrance, which has got a lot of sprit, like a Sprite gone, with a lot of citruses, that kind of thing. But it turns to a little bit more of a vanilla kind of a fragrance in the dry down. It's a fantastic party kind of a fragrance that you can definitely think about using. And for this year, I feel this is one of those fragrances that is absolutely beautiful to try. Though these are not relatively new releases per se, but they've come to India only this year as such, so you can definitely try out both of these fragrances. Both of them have got very good long-lasting fragrances like all Ahmed Al Maghrabi fragrances, but from a scent profile point of view, O'Clock and Tiff Tiff both are fantastic for you to try, and you kind of get them reasonably well for about 2600, 2700, I think so. Roughly for that particular price point, they are fantastic additions to your list of fragrances. Number 6 on this particular list is a fragrance from the house of Rasasi. Now, Rasasi has been releasing a lot of flankers, and I think this is the most strongest and long-lasting fragrance out there, the most beast mode kind of a fragrance. I personally like Elixir a lot, but Fire I think is actually underrated. So people who like a strong, nice, leathery, citrusy kind of a fragrance, you will like it a lot. This has actually got a lot of complement elements to it. It's got a lot of strong projection to it and performs really well. Does 7 to 8 hours of easy performance. The fragrance is good. It's a very strong fragrance, and if you compare to the other Rasasi fragrances, especially the Avas line, the original Avas, and if you think about the eyes and all of that, it is completely different to that. So this is a take on Gisas Imperial Valley, and this is a lot more masculine. When I say it's masculine, because of the leathery, ambery nature, it is that way. But a lot of women also like it to wear this because they kind of like the way in which the leather accord, the vanilla accord, the citrusy elements, all of them come together to give you a lightly sweet, masculine, beautiful fragrance to try. So definitely try out Fire from this year. All of the red flankers that have come
this year, including the 9 p.m. All of them are fantastic, and Havas Fire is definitely way lot better than Havas Black. The Black has got a lot better DNA, which is the Achivat DNA, but in terms of a scent profile, I absolutely love the 9 p.m. Rebel and the Havas Fire. The next fragrance is for women, and it is a fantastic fragrance, very popular this year. It is the Latafas Angam. Now the Angam is basically a take on Burberry Goddess. It's basically a scent that's got a little bit of vanilla, it's got a little bit of coconutty, citrusy kind of a vibe. Overall mild, pleasant, beautiful, sweet kind of a fragrance which performs really, really well. And the bottle is very beautiful as well, and it is one of those fragrances that really went out of stock very quickly and became a trend, and it was very difficult to get by. But this is a very beautiful fragrance if you want to gift to people who like a very nice vanilla, sweet, coconutty kind of a touch of a fragrance with a little bit light hint of citrusy element. Excellent dupe of Burberry Goddess. I've tried Burberry Goddess in Malaysia, and I really know when you smell Angam, it is absolutely very, very close to it. So it's in the 85-90% ballpark figure, and at the price point about 2,500 rupees, it's a fantastic fragrance to gift, especially if you have a woman companion and a partner and you want to give them something nice. You should definitely consider Latafa Angam. Performance is also good. You get an easy 5 to 6 hours of performance. Projection is about 1.5 to 2 feet. Overall, a great fragrance from Latafa to give out to the women out there. The next fragrance is my recent find, and I'm so happy to try it. And I think this is a trending one because this should be on that list, because this is the Rasasi Essential. It's basically a nice alternative of the Yves Saint Laurent Ultime, but I think it's also got a little bit of that take of Louis Vuitton's Imagination as well. It's a citrusy, sweet, fresh kind of a fragrance with a light hint of floral vibe, and at a budget price point about sub 1600, 1700 rupees or whatever price you get it. This is a fantastic fragrance which does 4 to 5 hours time. It's a proper hidden gem, and it's a very beautiful fragrance to add to your collection. In case you haven't explored this, definitely explore this one. I did read some comments about saying it's a little bit synthetic in its price opening, which it is, which I have also mentioned. But then again, at the price point in which you get a fragrance something like this is top notch. Okay, you can't complain about it. But if you're looking for all day wear, you're looking for something for office, you're wearing something casual, you want to get compliments, something clean, neat, soapy, all of them ticks all of these boxes. This is the Rasasi's Essential. Moving to the ninth fragrance, it is from the house of Latafa's line, and it is a flanker on the Asad series. Now, I did not get to review this fragrance. Definitely, this is one that was trending a lot as well. Like all of the Asad series fragrances that have been there, the black one definitely the best, the blue one definitely the worst. This is in between, and I'll tell you, this will gain a lot of popularity during the winter because this came at a wrong time. This came in February probably, I think, for us, but this is such a nice fragrance. It's a dupe of the Most Wanted, and it's done in a nice way. Citrus, cinnamon, oriental spiciness, a lot of vanilla, very beautiful DNA which is mass appealing, lovely scent profile. Performance is also good about it for 5-6 hours time, but it is not as masculine as how you would want the Asad to be, but it is also not as feminine as the blue Asad, that Zanzibar that came out. So this one for me is a really good one, and I'm telling you that come December time, this will be in a lot of demand. In case you are getting it now, this will be well macerated by that time, and this will be one of the nicest scents that you can wear for this year. Easy to gift, easy to give as a good recommendation to anybody because it is sweet. It has got a oriental spicy sweetness, cardamom, cinnamon heavy. It's got a lot of vanilla happening. It's got a little bit of a spicy element as well. Scent profile is good, 1.5 to 2 feet of projection. Performance is 5 to 6 hours. Overall, I think it's a pretty good fragrance. Don't always compare it to the Asad black one because that was a Swatch Elixir DNA. That DNA itself is very strong and long lasting. Most Wanted is definitely not in that ballpark, but overall this is a fantastic fragrance to add. Alright, the 10th fragrance here is the White Tiger from the house of Ahmad Al Maghrabi, which is again gone for decanting. This is a beautiful fragrance which is a blend of primarily Yves Saint Laurent's Y EDP, and then you can think about a little bit of the Rasasi Havas Ice. Flanker that comes together brings out a nice floral, citrusy, musky, spicy kind of a vibe, which is fantastic for office wear and fantastic for casual wear at any point of time. Very beautiful bottle, good present performance, 7-8 hours of performance, easy, 2.5 feet roughly you can say of projection. Overall, a scent profile that's very trending, very beautiful, and White Tiger is definitely one of the nicer fragrances.
Don't go by the Fragrantica reviews of it or notes of it saying earthy, mossy, citrusy. It is not definitely the case. It is spicy, floral, it's powdery, it's musky, a little bit of mossiness, earthiness, but not 100% earthy or mossy like how it's mentioned there. But overall, it's a very beautiful fragrance if you like the YSL Wild line of fragrances, and you will enjoy that as well. Another fragrance that I would want to kind of just give you a heads up here is the Igra, and that's an underrated gem that I will review separately. It's a fantastic fragrance to add to your collection. Now, those were the 10 fragrances that I thought you must definitely check out this year. In case you haven't tried, you should definitely try it and add them to your collection if you think they are something that you would like. Go to the website of ThePerfumeExperience.in to get these, or any other place that you would want. Visit our Bangalore store, try our fragrances, and try our decants as well, right? So, and I'll see you on another video. Before that, I'll quickly do the Hindi summary for you to catch up with Hindi. तो मैं अभी क्विकली आपको एक हिंदी में एक समरी दे दूंगा कि आज के 10 फ्रेग्रेंसेस जो हम बात करने वाले हैं जो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। नंबर 1 पे मेरा होगा लताफास हिज कन्फेशन। ये एक फ्रेग्रेंस है जो आपको काफ़ी हद तक डियोरोम इंटेंस या जुवेंची का जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे की याद दिलाएगा। काफ़ी अच्छी है, एक आइरिस वाली फ्रेग्रेंस है जो आप ज़रूर डेट नाइट्स में पहन सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, सॉफ्ट प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस है, आपको एक अच्छी प्रोफाइल देगा, एक अच्छी डीएनए देगा, स्पेशली फॉर डेट नाइट्स आपको ज़रूर आप इसको पहन सकते हो। और नंबर 2 पे है तेरियाक इंटेंस, जो एक लताफा की एक फ्रेग्रेंस है, एक डार्क एम्ब्री प्लम टाइप की एक फ्रेग्रेंस है। काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस लगती है मुझे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है और इस साल काफ़ी बिकने वाली भी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप कुछ शादी के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए कुछ पहनना चाहती हो तो ज़रूर आप तेरियाक इंटेंस को आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 फिर है अफनान का कलेक्टर्स एडिशन। ये एक ऑल्टरनेटिव है, एवेंटस एब्सोल्यूट का माना जाता है, बट बिल्कुल मुझे वैसा नहीं लगता है क्योंकि ये एक स्पाइसी डीएनए है, थोड़ा एरोमेटिक है, थोड़ा ग्रीन फ्रेश की एक वाइब देता है। बट मुझे लगता है मैट्रिक्स थीरम मैट्रिक्स की जो वाइब है वो काफ़ी मिलजुलती है, बट उसकी जो ड्राई डाउन है वो इससे भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल ये थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाली एक फ्रेग्रेंस है, तो थोड़े लोगों को पसंद आएगी, थोड़े लोगों को नहीं पसंद आएगी। इसका ज़रूर डीकैंट आप ट्राई कर लीजिए, फिर सोचिए अगर आपको इसको लेना है। बट काफ़ी एक डिसेंट की परफॉर्मेंस फ्रेग्रेंस है जो आपको 5-6 घंटे की परफॉर्मेंस देती है, बट प्रोजेक्शन इसकी सॉफ्ट है, एक 1.5 से 1.5 फीट तक मिलेगी तो बहुत बड़ी बात है। बट अफनान की और एक फ्रेग्रेंस है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और वो है 9 PM रेबल। ये एक पाइनएप्पल ओक मॉस शुगरी स्वीट फ्रेग्रेंस है। ऐसा लगता है कि अवेंटस को बकरात रूज के साथ मिक्स कर दिया और इसको बना दिया। बट इसका एक ज़बरदस्त अच्छा एक फ्रेग्रेंस है क्योंकि ये परफॉर्म अच्छा करता है, 7-8 घंटे की अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, मास प्लीजिंग है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि लोगों को आराम से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे और ये काफ़ी अच्छी है स्मेल करने के लिए, समर के लिए, पार्टीज़ के लिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। वो नंबर 4 है। 5 और 6 पे है आमद अल मगरगी की तरफ से, ये है ओक्लॉक। ये जॉन पॉल गॉटियर का अल्ट्रा मेल का एक डूप है। अगर आपके पास 9 PM नहीं है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसकी लास्टिंग अच्छी है। इसकी जो एक स्वीटनेस है वो भी ज़्यादा है, बबलगमी इफेक्ट है, काफ़ी सब हद तक है। बट अगर आप 9 PM या इसके बीच में कंफ्यूज हो तो आप 9 PM ही ले सकते हो। बट मुझे दोनों सही लगते हैं, मुझे 9 PM थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये भी एक काफ़ी ट्रेंडिंग वाला एक फ्रेग्रेंस है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये हो गया ओक्लॉक। और एक टिफ के बारे में मैंने पूरी रिव्यू की है। एक स्प्राइट जैसी एक फ्रेग्रेंस है जिसमें बहुत बबली इफेक्ट मिलती है, थोड़े सिट्रस मिलता है, बाद में थोड़ा एक वेनिला का एक ड्राई डाउन मिलता है। काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ एक फ्रेग्रेंस है जो ट्रेंडिंग है, पार्टी के लिए आप ज़रूर पहन सकते हो और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दो भी आपको लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस है और इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। माना जाता है कि टिफ और ओक्लॉक नए रिलीजेस इंडिया में तो ज़रूर नहीं है, थोड़े पुराने रिलीजेस हैं, बट इंडिया में क्योंकि इसी साल आए हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट जो फ्रेग्रेंस है ये है फायर। ये है रसासी के फायर और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है काफ़ी मैस्कुलिन है और लाउड है और मुझे लगता है कि रसासी के आवाज़ के लाइन में से सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यही है। इसकी एक लेदर की नोट, एक थोड़ी स्वीट स्पाइसीनेस और एक सिट्रस एलिमेंट जो आते हैं काफ़ी अच्छी लगती है। ये जितनी मर्दानगी की टाइप की फ्रेग्रेंस है उतने औरतों को बहुत पसंद आती है। और अगर आप चाहते हो एक फ्रेग्रेंस जो 7-8 घंटे लास्ट करे, 2-2.5 फीट प्रोजेक्ट करे और अच्छी तरीके से एक यूनिक सेंट प्रोफाइल है तो डेफिनेटली आप हवास को ट्राई कर सकते हो, फायर को। ये आपकी जो आवाज़ ओरिजिनल है या आवाज़ आई से उन सब से बहुत हटके है,
ब्लैक भी बड़ा अच्छा है, बट ब्लैक वाला जो उसका प्रोजेक्शन है थोड़ा सॉफ्ट है, उस हिसाब से मुझे लगता है फायर सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्टिंग और लॉन्गेस्ट लास्टिंग हवास के लाइन की फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लताफा के अंगम के बारे में। ये एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है जो बर्बरी गॉडेस का एक ऑल्टरनेट माना जाता है। ये एक सिट्रसी वेनिला कोकोनटी टाइप का एक फ्रेग्रेंस है जो काफ़ी अच्छा है। इसकी जो सेंट प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी है और इसकी परफॉर्मेंस 5-6 घंटे तक है। और जो बर्बरी गॉडेस का एक ऑल्टरनेट माना जाता है, ये एक बहुत ही अच्छा वाला ऑल्टरनेट है जो 85-90% क्लोज है। मैंने इसको मलेशिया में ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छी है और इंडिया में ये बहुत ट्रेंडिंग से बिक रहा था, कभी कभी बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अभी वापस स्टॉक में आ गया है। और जो भी फ्रेग्रेंसेस बात कर रहा हूँ, आप ज़रूर हमारे वेबसाइट ThePerfumeExperience.in या हमारे बैंगलोर स्टोर पे ट्राई कर सकते हो। इसके डिकैंट्स आपको मिल जाएंगे, इसके पूरे बॉटल्स मिल जाएंगे, जो भी अवेलेबल है वो मिल जाएंगे, तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। सॉरी, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। और अगर आपके वुमेन फ्रेंड्स हैं और आप आपके किसी कोलीग हो या गर्लफ्रेंड, आप वाइफ को आप गिफ्ट करना चाहते हैं एक वुमेन फ्रेग्रेंसेस, तो डेफिनेटली लताफा अंगम को ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एक मेरा हिडन जेम वाला फ्रेग्रेंस है जिसको मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया। ये है रसासी एसेंशियल। मुझे लगता है कि इसको सारे लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त है। इसकी जो एक सिट्रसी स्वीट लाइट फ्लोरल वाली जो वाइब है, एक बहुत ही बढ़िया यूसल और की अल्टीम की एक ऑल्टरनेट है। बट इसको ये आपको ज़्यादातर इमेजिनेशन का भी एक याद दिलाएगा, काफ़ी हद तक बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल और एक ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है जो 1500-1700 के अंदर आपको आराम से मिलनी चाहिए। उस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये एक ऑफिस के लिए, कैजुअल वेयर के लिए, कहीं भी पहनने के लिए एक आराम से पहनने वाला एक सुपर फ्रेग्रेंस है ये जो है रसासी एसेंशियल। नंबर 9 पे ट्राई करेंगे हम रसासी का लताफा का असद बर्बन। ये एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, इसका मैंने रिव्यू नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये नवंबर दिसंबर तक काफ़ी मशहूर हो जाएगा और मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट है मोस्ट वांटेड का, द मोस्ट वांटेड का, जो एक सिट्रसी स्वीट कार्डमम ओरिएंटल स्वीटनेस वेनिला वाली एक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी है। इसका सेंट प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, 2-2.5 फीट का आपको प्रोजेक्शन मिल जाता है, 5-6 घंटे का लास्टिंग मिल जाता है। नाउ अभी इसका एक ही प्रॉब्लम है कि लोग इससे ब्लैक वाले से कंपेयर करते हैं क्योंकि ब्लैक सुवाज एलिक्सर का डीएनए था, वो वैसे ही लॉन्ग लास्टिंग डीएनए है, अच्छा प्रोजेक्टिंग डीएनए है, तो उसी सेम परफॉर्मेंस आपको इधर नहीं मिलेगी। बट ये ज़रूर असद ज़ंजीबार से बहुत बहुत दूर तक अच्छा है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वाला फ्रेग्रेंस है जो आपको ट्राई करना चाहिए। और मेरी बात याद रखना कि ये दिसंबर में आपको बहुत महंगा होने वाला है और काफ़ी ट्रेंडिंग में आ जाएगा क्योंकि इसका डीएनए बहुत मास प्लीजिंग है, कॉम्प्लीमेंटिंग है, ईजिली आप गिफ्ट कर सकते हो, ईजिली आप इसे रेकमेंड कर सकते हो और कोई भी जो पहनेगा उस सबको ये अच्छा लगेगा। चलो लास्ट वाला फ्रेग्रेंस हम बात करते हैं, वो है अहमद अल मगरिब की तरफ से व्हाइट टाइगर। ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग वाला फ्रेग्रेंस है। ये आपको यूसोलोरो का YEDP और रसासी हवास का आइस की एक मिलावट की तरह एक फ्रेग्रेंस आता है जो स्वीट स्पाइसी मस्की और थोड़ा फ्लोरल वाइब के साथ आता है। काफ़ी अच्छी तरी फ्रेग्रेंस है। अगर आप फ्रेग्रेंटिका का नोट्स पढ़ेंगे जहाँ पर वो सिट्रस मॉसी मेंशन हुआ है, वो बिल्कुल इसका डीएनए नहीं है। एक पाउडरी मस्की एक स्पाइसी फ्लोरल टाइप्स का एक फ्रेग्रेंस है जो काफ़ी अच्छा है। वो आप आराम से ऑफिस के लिए कहीं कैजुअली जाने के लिए पहन सकते हो और लॉन्ग लास्टिंग है, 6-7 आवर्स मिल जाता है आपको और 1.5 फीट से 2 फीट का प्रोजेक्शन है। काफ़ी ओवरऑल सेंट प्रोफाइल अच्छी है और बहुत मास प्लीजिंग है। और एक फ्रेग्रेंस मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, वो है इग्रा अहमद अल मगरिब का एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, उसका मैं एक फुल रिव्यू बनाऊंगा। तो ये थे मेरे 10 ट्रेंडिंग फ्रेग्रेंसेस इस साल के जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपने इनको ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, डीकैंस ट्राई कीजिए, फुल बॉटल ट्राई कीजिए और इनको आप आपके कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आज पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। And that's what I thought about all of the 10 fragrances from the houses, different houses, and I think you should definitely try them. Quick update, all our inspired fragrances are back in stock. You can definitely try them. We have some samples on our website. You can try them as well. And I'll see you on another video. Until another time, take care. Bye-bye.